We are also joined by Professor Mr. Judge, President, Sri University, on the Zoom. There is no volume, not able to hear anything. Rupal, there is no volume. I am not able to hear anything. I can see that you are saying something, but there is no audio. Are you able to hear me? Can you show me a thumbs up? Okay. डॉक्टर शर्मा, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? ये जूम से आ रही है। अभी आपका करवा देते हैं, उसके बाद तो डू यू वांट मी टू स्पीक नाउ? एक्चुअली आपके पास थोड़ा समय है। एक्चुअली नहीं, मैंने कुछ अभी दे देते हैं आपका टाइम। ओके ओके। I now take the opportunity to introduce Professor Mr. Kulkarni of the Professor Kulkarni is a successful dancer turned educator, a best-selling author, a global thought leader, and a transformational leadership coach. He is currently holding many prestigious positions. To name a few, she is the President World Forum for Ethics in Business, member of the Board of Again, there is no volume.
Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Shri Gurave Namaha. Are you able to hear me? Can you show me by thumbs up if you're able to hear me? Okay, thank you. That's very good. Jai Gurudev, good morning, namaste. On behalf of Shri Shri University, the entire team, I'm delighted and honored to welcome Dr. Ishwar Basavareddy ji, Director, Morarji Desai, National Institute of Yoga, Shri Arun Malik ji, Superintending Archaeologist, Archaeological Survey of India for the Bhubaneswar Circle in Odisha, Shri Samarth Verma ji, IAS District Collector Puri, Dr. B.R. Sharma ji, Vice Chancellor, Shri Shri University, all faculty members and team members of the Faculty of Yoga, and all yoga practitioners, enthusiasts who are with us in person today at the beautiful location of the Konark Temple, Sun Temple, and all friends and yoga enthusiasts who have joined us live online via Facebook, YouTube, and other channels. Firstly, I would like to extend my warm regards and wishes to Morarji Desai National Institute of Yoga, Ministry of Ayush for nominating Shri Shri University as one of the 100 institutions across the country to partner in its campaign 100 Days, 100 Cities and 100 Organizations to promote and advocate, publicize the various dimensions of yoga and its very vital impact on health, well-being, and therefore individual and societal peace. I would also like to place on record our deep sense of appreciation for the very significant work done by the Ministry of Ayush in reviving the ancient knowledge of the system of yoga in the country. It's a very bold and major step towards the goal of restoring India's space and role in the world, as per the national education policy also, the mandate of which is to reinstate India's role as the leader in education. Being from the parentage of art of living, and given the stature and scope of the global work of our founder, Pujya Gurudev Shri Shri Ravi Shankar ji, for the last 4 decades, to create a stress-free, violence-free world, which is really living like a one world family. Shri Shri University has conceived from the very beginning the various aspects of holistic well-being. In fact, our faculty of yoga and wellness was one of the first faculties that we started in our very first year of inception in 2012. Um, in addition to that, in Shri Shri University, we have an ecosystem which equips our students to learn the practical tools and techniques of yoga, pranayama, meditation to handle their mind, deal with their stress, become resilient, and really become um, uh, well-rounded individuals and human beings. The last 2 years of the corona pandemic has shown us how vital it is not only to care for our physical health, but also our mental and emotional well-being. And I am very proud that the fact that all our faculty members, all our teachers, all our students are practicing yoga, are practicing meditation, Sudarshan Kriya, meditation. We, various pranayama, breathing techniques on a daily basis. Sadhana and seva are an integral part of the way we live our life on campus. And we have seen the difference it has made, the impact it has made on how all of us have been able to deal with the pandemic. And all of us are seeing how it has impacted students, everybody in the world. Depression has increased, aggression has increased, and there is only, we have seen the very, very vital benefits of yoga, of meditation, of pranayama. We are doing Sudarshan Kriya for the benefit of our mental well-being and how it has helped us deal
with our overall holistic health. In fact, this is the basis for individual well-being. It is the basis, therefore, for individual peace, which is the basis for societal peace. Gurudev has given a call, a global call to the whole world, saying that if each of us commit to stand for peace, we will play our role in making our society and our country, and therefore the whole world at a large, a more peaceful place. We are seeing what is happening in the world today, what is happening in Europe, what is happening in Middle East. The world today needs to recommit itself to the fact that we want to be responsible to create a peaceful world. We want to contribute to it, and we need it, because otherwise how do we live? How can we create a peaceful, prosperous world? Because peace is the basis of prosperity. And Gurudev has given a call that we all should commit to saying that I stand for peace personally, and I urge everybody today in this very important gathering to also commit that we individually stand for peace. And yoga is the basis for that. You know, yoga karmasu kaushalam aap to jante hi hain. Or yoga is the brings skill in action. It brings that beauty in the being. It sharpens the intellect. It creates and enhances the intuitive power. It makes our personality more vibrant, not to talk about the physical health benefits of it. You know, I was personally in the United Nations on the very first year of the International Day of Yoga, where Gurudev was invited to preside on the Yoga Day celebrations along with the then UN Secretary General, Honorable Ban Ki-moon. And it was amazing. Wherever you went, people were walking around with yoga mats. 1 year after that, I was in the European Parliament, where the International Day of Yoga was celebrated. And everywhere in the parliament, where you normally see people walking in dark black suits, people were walking in track pants and t-shirts with yoga mats in hand. And this is the incredible contribution of our ancient Indian heritage, wisdom, and our place in the world today. We have brought this to the whole world. So Honorable Prime Minister Narendra Modi ji gave this call to make 21st of June as International Day of Yoga. You know, I have heard Gurudev speaking about it for many years already. You know, since 15, 20 years, he has been speaking about it in so many different fora internationally also. And it's great that today the whole world symbolically also celebrates and honors one day for yoga. I am told last year or year before last, for example, close to 2-3 billion people in the world are doing yoga on that day. And I think this is a great contribution that we have made as a country to the whole world, and we should feel very proud of it. I am very proud of what the spirit of sadhana is doing in Sri Sri University. Our students are dynamic, they are vibrant. Our students are extremely dynamic, extremely vibrant, have a can-do positive attitude, have an attitude of service, and that only comes from that inner space of peace. So I am very delighted with this campaign that you are running for 100 cities, 100 days, and 100 organizations. And it's beautiful today that at this such a historic and such a stunning location like our beautiful Sun Temple in Konark. Today, yoga enthusiasts came together to do yoga. I was seeing the live videos in the morning. It was looking very nice, and I think it is good to do this at such historic locations. It, I think, reinforces the importance. We stay committed
to health, holistic health. Yoga is a part of it. We started our Ayurveda hospital 2 years ago, where we have a 100-bed Ayurveda hospital, and we started the hospital, and in just 3-4 days, the very, very terrible storm Fani hit the state of Odisha, and through that, our doctors and nurses continue to serve people from our neighborhoods, from our communities, from our state. And I'm very proud to say that almost 100,000 patients our doctors and nurses have seen in the last, have served in the last 2 years. And this year, as we speak, in a few days, our Ayurveda college will start, and we have laid the foundation just 3 weeks ago, laid the foundation for what will be a one of its kind integrative center for integrative medicine in our campus. I think a center like this does not have a precedence in our country, and definitely therefore not in the world, which will offer a combination of Ayurveda, yoga, osteopathy, and soon to come naturopathy and allopathy, all practices of medicine, all forms of medicine in one central place, for giving the opportunity and the choice to people to choose from their preferred form of medicinal line of treatment. So we are very proud of that, to what we are bringing to Odisha and to India, and with Gurudev's vision of creating a center of education which really combines in spirit and action the best that the east of the world has to offer and best that the west of the world has to offer. I think we stay committed. We have a long-term vision for this, and I think we are one of the few universities in the world, I can definitely say with great pride, which starts its academic year with a 2-3 day silence retreat, where all our faculty members, team members, all students, we all participate in a silence retreat where we meditate, we do yoga, we really go to connect deep with ourselves, so that that becomes our foundation for beginning the whole academic year in a very positive, peaceful manner. So I'm really delighted that we are having this event today. I would have, of course, loved to be there in person. It's been some time now because of the COVID. It has been a big break to I haven't been to the Sun Temple in the last 2.5, 3 years. So look forward, hopefully soon, to visit also. And I really wish this event a grand success. And I would like to say that in Shri Shri University, you have a partner, you have an advocate, and you have a champion for making the knowledge of yoga, the knowledge of meditation, the knowledge of Ayurveda, to get it integrated in our higher educational system. I think it is very important. Just yesterday, I was at a higher education leadership and skills development summit hosted by the ASSOCHAM, and one of the big discussions there were vice chancellors, founders, chancellors from about 80-90 universities together, and one of the big discussions was how the pandemic has really disrupted and taken a toll on our students' mental health. And therefore, I think the need is there, and let us work together so that we can really help all our sister educational institutions. There are 45,000 colleges and universities, higher education institutions, colleges together in India, and there is a lot of work for us to do to make sure that in all these places the practice of yoga, the practice of meditation becomes a way of life. I think we owe it to our students, and to therefore make sure that they become strong citizens of the world, strong and humane citizens of the world for tomorrow. So you can rely on us, and we are very, very committed to this. We have already done it in the last 2 years, whether it's IITs, IIMs, whether it's central state universities, private universities, through so many forums, we have been with them, we have reached out to them, we have supported them
to help them get the knowledge of yoga and meditation to their students. In fact, in the first year itself, in 2022, Gurudev created a short, personally guided the creation of a short protocol, which was offered actually free to all educational institutions in India. And I am told that close to 7-8 million students were able to take benefit of it around India. And I think that we need to continue to stay committed to. So wish the program today all the very best. And next time, I would love to welcome you to do this kind of an event in our campus as well. We have a beautiful, stunning campus, which itself is an architectural marvel, given its unique quarry terrain. So योगा को कभी 300 फुट बिलो ग्राउंड लेवल पे भी करेंगे, जहां हमारे क्वारीज में हमारी ऑडिटोरियम्स हैं, तो वो भी मैं आपको निमंत्रण देती हूँ सबको. और thank you very much again for this event and wish it all the very best. Namaskar. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you so much, ma'am, for your enriching words. It's always great to listen to your words of wisdom. Thank you so much once again. It's my honor to now introduce our guest of honor, Dr. Ishwar Baswa Reddy ji. Sir, am I audible? Sir, am I audible? Not in the meeting. Not in the meeting. We will now invite our students of yoga to do the dance performance. Ready? Are you ready?
खुद की खोज में था, किसने जब मेरे वजूद की समय को भी तलाश, समय को भी तलाश, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ नहीं तो वस्तु, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ नहीं तो वस्तु तू, ये बेड़ियां बिठार की बना दे तो शस्त्र, बना दे तो शस्त्र, किसने जान से वजूद की समय को भी तलाश, Super performance by the Department of Yoga. Give a big round of applause. Can you make it a little more bigger? It's my honor to now introduce our guest of honor, Dr. Ishwar Baswareddy ji. Dr. Baswareddy is the director of Morarji Desai National Institute of Yoga, Ministry of Ayush, Government of India. Since June 2005, he assumed the additional charge of newly created post of advisor, Yoga and Naturopathy in the Ministry of Ayush, Government of India in the year 2019. I request you, sir, to please address the gathering. Actually, if you can, it is with you. Okay. there. Later. Can prompt him to put this video on, please.
Okay, maybe he is taking some more time to join. I would now like to invite Mr. P. K. Nayak, Assistant Superintendent Archaeologist, Archaeological Museum, Konark, our guest of honor. It's my honor to introduce our guest of honor for the program, Sri Arun Malik ji. Welcome, sir. Superintendent Archaeologist, Archaeological Survey of India, ESI, Bhubaneswar Circle, Odisha. He has been vastly experienced in archaeological excavations and participated in excavations of Harappan sites of Dholavira, Rakhigarhi, Bagasara, and explored and discovered over 50 Harappan sites in Gujarat. He is instrumental in conservation of Sri Jagannath Temple, Puri, World Heritage Monument, Sun Temple, Konark, Sri Lingaraj Temple, Bhubaneswar, excavated Buddhist site of Udaygiri, Jaipur, Udaygiri and Khandagiri Jain caves, and recent archaeological excavation around Sarideol, Bhubaneswar, and also discovered a sculpture of presiding deity of Mahishasura dating back to 6th to 7th century AD. Please give him a big round of applause. Sir, we are now requested to address the gathering. Night, sir, and students, faculty members, media persons, online enthusiasts who have joined us in this program. एक बड़ा कठिन विषय है आज मेरे लिए बोलना, क्योंकि योगा से मेरा कोई नाता ही नहीं है, आपको पता सकता है आप लोगों को। हाँ, ये जरूर है कि भारत सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है कि योगा को पॉपुलराइज किया जाए और योगा यूथ के अंदर योगा प्रैक्टिस एंड हेल्थ के प्रति जागरूक बनाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास है भारत सरकार का। और इसके अंदर जिस तरह से श्री यूनिवर्सिटी भारत सरकार के साथ कदम मिला के चल रही है, ये एक बहुत बड़ा समय है। ऐतिहासिक रूप से हम लोग सब बोलते हैं कि योगा इज एंशिएंट प्रैक्टिस। जरूर योगा इज एंशिएंट प्रैक्टिस, पर क्या आप में से लोगों को पता है कि सबसे पहले ये योगा के साक्ष्य कहाँ से मिल रहे थे? कोई बोल सकता है स्टूडेंट कि हमें सबसे पहले कहाँ से इसके साक्ष्य मिले कि योगा एक एंशिएंट प्रैक्टिस है? वेरी गुड। हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमें एक सील मिला जिसे हम कहते हैं पशुपति की मोहनजोदाड़ो से, और वो सील के अंदर शिवा इज शोन इन द सीटेड योगिक पोस्चर सराउंडेड बाय वेरियस एनिमल्स। वो एक सील ऐसी थी जिससे हमें पता चला कि हाँ ये कोई योगिक प्रैक्टिस चल रही है। इसके अलावा जो हमारे स्थापत्य कला है पूरे भारत में जो विद्वान है, अलग अलग समय काल में अलग अलग क्षेत्र में हमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं स्कल्पचर्स के अंदर, टेम्पल के अंदर, कि योगा को एक एंशिएंट प्रैक्टिस स्थापित करती है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जिसमें एक बहुत फेमस पल्लवा पैनल है जिसे हम कहते हैं अर्जुना पिनांस। ये है महाबलीपुरम में, जिसके अंदर योगिक पोस्टर में ताड़ासन में एक साधु को दिखाया गया। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास में, जिससे हम योगिक प्रैक्टिस को बता सकते हैं। इसके अलावा जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं वो तो अपने अपने बहुत बड़े साक्ष्य हैं और बहुत बड़े प्रमाण है इस बात की कि हमारे देश में हमारे कल्चर के अंदर योगा प्रैक्टिस चल रही है। इस विषय पर मैं ज्यादा बोलूंगा,
के सर यहाँ बैठे हुए हैं, सर मेरे से ज्यादा इस पे रिसर्च कर चुके हैं। लेकिन हाँ ये है, ये हमारी अपनी परंपरा है, हमारा कल्चर है, और इस प्रैक्टिस योगा की जो पद्धति है जिससे कि हमारा सर्वांगीण विकास हो सकता है, मेंटल हेल्थ एंड मेंटल एंड हेल्थ विकास उस तरह से उसको हमें अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए। और यही प्रयास है भारत सरकार का कि हम लोग इसको बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। अभी आज से लेके 38 दिन बाद इंटरनेशनल योगा डे 2022 सेलिब्रेट किया जाएगा। और मैं श्री श्री यूनिवर्सिटी के साथ से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो सेलिब्रेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आयुष मंत्रालय के साथ में मिलकर कर रहे हैं, और भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर हम लोग कोणार्क और राजा रानी जो सेंट्रल प्रोडक्टिव मॉन्यूमेंट पे ये कार्यक्रम करेंगे, उसमें हमारे साथ आए और हमारे कार्यक्रम को सफल करें। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं विराम लूंगा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक्स ऑल। Speak a few words. Honorable VC sir, Malik sir, and esteemed dignitary, and esteemed guest and student. आज जो सन टेम्पल कोणार्क में जो प्रोग्राम है इंटरनेशनल 38 डे के बाद, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 38 डे के बाद जो होगा, रियली आज का दिन जो है हिस्टोरिक डे है, क्योंकि सन टेम्पल कोणार्क कॉम्प्लेक्स में एक हिस्टोरिकल फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में इंडिया का बहुत ही फेमस टेम्पल है। वो कॉम्प्लेक्स में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है 38 डे के बाद स्टार्ट होगा, और उसको शुरुआत बोलते हैं। ये हम लोग के लिए, भारतीय प्रातत्व सर्वेक्षण वनस्पति मंडल के लिए ये बहुत बड़ा मतलब सफलता है। और मुझे इसी प्रोग्राम में गेस्ट ऑफ ऑनर करके बुलाने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सभी को। और हम लोग का साथ कि उड़ीसा में टेम्पल जो है बहुत मतलब 5th सेंचुरी से स्टार्ट होता है, मानवगिरी से लेके अप टू 16th सेंचुरी 18th तक। तो आप जब मंदिर का वाल में मूर्तियां वगैरह जब देखेंगे, बहुत सारे टेम्पल भुवनेश्वर में है, या कौन टेम्पल कोणार्क में है, या सारी जोल में है, या बाकी जो मोनूमेंट है, बहुत सारे एग्जैक्टली योगा बोलना तो ठीक नहीं है कि बहुत पोस्टर मिलता है। कोई भी योगा जैसे पोस्टर जो है बहुत कोई स्टडी करेंगे या कोई पीएचडी जैसे करेंगे, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर वगैरह में जो है योगा टाइप का जो पूरा पोस्टर मिलता है, या अलग अलग स्टेट में भी मतलब बहुत मिलता है इसी ढंग का। तो आप लोग में से कोई अगर स्टडी करें, जितना भी एंशिएंट मोन्यूमेंट्स में या बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट में या बाहर का भी मोन्यूमेंट में जो है, या वेस्ट मोन्यूमेंट है या ऑल ओवर इंडिया जितना भी मोन्यूमेंट है, बहुत सारे टेम्पल में जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। और इतना ही बोल के मैं विराम लेता हूँ। Thank you very much, sir. I now invite Honorable Vice Chancellor sir to felicitate our chief guest.
I request Vijaya ma'am to please felicitate Nayak sir. I now request Dr. Vijayalakshmi Mohanty ji, Director Human Resource Development Center, Sri Sri University, Head PR, Sri Sri University, Associate Professor, Faculty of Management Studies, to please propose the vote of thanks. Jai Gurudev, Jai Jagannath. Mannath Sri Jagannatham Madguru Sri Jagadguru Madatma Sarvabhutatma Tasmai Sri Gurave Namaha. I respect Arun Malik ji, Archaeologist, Odisha, Bhubaneswar Temple. Mr. P.K. Naik ji, Assistant Superintendent, Archaeological Museum, Konark. Dr. Ishwar Vasava Reddy ji, Director, Morarji Desai National Institute of Yoga, Ministry of Health. President, Puri University, Professor Mrs. Rajita Puttanaji, Vice Chancellor Dr. B.R. Sharmaji, all the teaching and non-teaching faculty of this university, all the staff of Archaeological Survey of India, Municipal, tourism staff of Government of Odisha, media persons, and my dear students. At the onset, I would like to thank Professor B.R. Sharmaji, Vice Chancellor of this university, for thinking about such an innovative idea of organizing Yogotsav in Konark. I extend hearty thanks to Morarji Desai National Institute of Yoga for choosing Sri University as one of the institutes in the initiative of 100 organizations, 100 days, and 100 places to commemorate the International Day of Yoga. Today, we stand on the 38th countdown to 38 more days to go to International Day of Yoga. And huge thank to Archaeological Survey of India, especially Arun Malik ji, to grant the permission to conduct in record time. So we went on Friday and we had permission on Monday. We thank such a responsive government. And he has also agreed to come to Puri University and collaborate for more programs. And thanks to Mr. P.K. Malik ji, our guest honor, and the whole ASI team, and the brilliant photographer Vijay ji and Neeraj ji, everybody, Rahul ji. These programs are very easy for us in Sri University because we have in-house logistics. We do not have to struggle for a mic. Anytime you can walk in and there is a mic and there is a projector. We have various rooms to conduct such programs. But such things, such events, such initiatives raises the bar and pushes our button and make us achieve higher. I would like to quote our founder, Pujya Gurudev Sri Sri Ravi Shankar ji. Many of us know about him and many of us have seen Brahmanad, Antarnad, Anahatnad. So one musical instrument and thousands of artists in one place. That was the practice and it used to be Guinness Book of World Record. And similar, more than a dozen of such Guinness Book of World Record happened. How many? Jagar ji, no? Okay. We may request Vasudha Reddy ji to speak, and thank you, sir, for joining us amidst of busy schedule. I will continue after his speech. Thank you. Am I audible now? Am I audible? Yes. Am I yes, audible? Sir. Okay. Yes, sir. Okay. Thank you very much. Namaste. Om Shanti Shanti Shanti. पूज्य गुरुदेव जी के दिव्य चरणों में प्रणाम करते हुए इस समारंभ के माननीय अध्यक्ष श्री श्री योग विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी है
मैडम को मेरा प्रणाम। विश्वविद्यालय के घन कुलापति प्रोफेसर बी.आर. शर्मा जी और कोणार्क मंदिर के यहाँ कार्यकारी मंडल अध्यक्ष बैठे हुए, मुझे क्षमा कीजिए, नाम भूल गया मैं। और मंच को उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण और सभागृह में उपस्थित सभी योग विद्यार्थी मित्रों और ऑनलाइन से जुड़े हुए सारे योग प्रेमियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि थोड़ा बिजी चल रहा है और हर एक घंटे एक एक प्रोग्राम होता है कि ट्रैवलिंग भी है, लेकिन आप लोगों का फिक्स्ड प्रोग्राम में समय आगे पीछे हो गए तो मैं मैनेज करने में मुश्किल होती है। सो इसलिए जो मेरे वजह से जो असुविधा हुई है वो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज सवेरे मैं आप लोगों का योग अभ्यास कर रहे थे, मैं उसको देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक हिस्टोरिकल प्लेस है कोणार्क मंदिर का, इतना ही एक बड़ा महत्व है। इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट इन द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया। सो हम इस बार सोच रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव में 75 हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल साइट्स है हमारा, उसको विश्व टूरिज्म मैप में लाने के लिए भारत सरकार ने इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए टूरिज्म को भी बढ़ाना है। वो टूरिज्म हमारा संस्कृति का प्रतीक हो, क्योंकि हम आजादी का अमृत महोत्सव इस साल मना रहे हैं, क्योंकि योग हमारा कल्चर है, हमारा संस्कृति है। सो हमारा संस्कृति का पूरा विश्व पटल पर लाने के लिए इस बार हम सब, जैसे आदरणीय कुलपति प्रोफेसर शर्मा जी बता रहे थे, 100 दिन का काउंटडाउन में 100 अच्छे संस्थाएं इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। सो आज आपका विश्वविद्यालय और कोणार्क को भी आपने इस भूपट में लाया है, उसका श्रेय आप सभी लोगों को जाता है। और एक बार हृदय से मैं आपको अभिनंदन करते हुए 21 जून को इससे भी बड़ी मात्रा में यही कोणार्क प्लेस में श्री श्री विश्वविद्यालय में हजारों संख्या में योग अभ्यास करेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ, आज भी मैं हैदराबाद में इसलिए आया हूँ कि उस दिन हजारों संख्या में, अभी 25वां दिन का हम मनाने जा रहे हैं, उसमें बहुत बड़े सेलिब्रिटीज मिनिस्टर्स वगैरह आएंगे, इसलिए तैयारी के लिए आएंगे। ये कहने का मतलब है कि इस बार हमारा टारगेट है कि 25 करोड़ से ज्यादा लोग 21 जून पर हम योग अभ्यास करके विश्व को एक संदेश देंगे कि योग करने से हम निरोगी रहेंगे और शांति और सुख जीवन उसका कैसे हम कॉस्ट इफेक्टिव में, जीरो बजट में हम कर सकते हैं, इसका संदेश हम विश्व को देना चाहते हैं। मैं अभी सब्जेक्ट पर 3 चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। Just I would like to highlight 3 important aspects. First is what is the purpose of life? So I am not going to the purpose of life according to yoga or the philosophy, but the people like you and me, what is the purpose of life? So purpose of life is to have happy and healthy. Sukha pravritti, dukkha nivritti. Everybody wants to be happy all the time. Nobody wants the sorrow or the pain. So for that happiness, there are some basic instincts happiness के लिए. What is that basic instinct? One is the food, the आहार. So सांस लेते हैं, सही ढंग से सांस लिया, पानी पीते हैं, सही वक्त पर पानी पिया, सही वक्त पर खाना खाया. This is comes under the food. Inception कहते हैं हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में. सो एक बार हमने सही सारे करने लिए तो ये एक शरीर का जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, मूलभूत आवश्यकता है, सो वो फुलफिल हो जाएगा. दैट इज वन थिंग. लेकिन हम वो सही ढंग से नहीं करते हैं तो वहां बाधाएं आएंगी. सो इसको आगे बढ़ते हुए इट इज इंसेप्शन, देन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सर्कुलेशन एंड एलिमिनेशन प्रोसेस. द एंटायर थिंग इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. पूरा आपको मेटाबॉलिज्म सही ढंग से होना चाहिए.
ये मेटाबॉलिज्म सही होता है तो आजकल हम बात करते हैं कि जीवन शैली संबंधित बीमारियां, दे आर कॉल्ड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आज को नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स कहा जाता है। सो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो सही वक्त पर खाए, उसके लिए हमें एक कुछ शिक्षाएं है। हमारे ट्रेडिशन में सारे लोग स्वस्थ क्यों रहते थे कि वो जो मैं बता रहा हूँ उसको जीवन शैली के रूप में उनको विशेष ट्रेनिंग नहीं दिया जाती थी, कि पहले वो लोग ऐसे ही नियमों को बहुत अच्छी ढंग से पालन करते थे, इसलिए 100 साल तक वो आराम से जीते थे लोग। एक बार हमने तो पुराना हमारा संस्कृति में जाना है कि हमारा पूर्वजों ने 100 साल कैसे स्वस्थ जीवन जीते थे, उसी का अनुपालन करने के लिए हमने सबसे पहले इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमने जोर दे रहे हैं। दिस इज वन थिंग। सेकंड है कि हमारा जो मात्रा है नींद, वो भी आवश्यकता है। जैसे हमने थक जाते हैं कि हमें विश्राम चाहिए, रात होते ही हमें नींद चाहिए, लेकिन नींद का प्रॉब्लम है, क्वालिटी ऑफ स्लीप इज द प्रॉब्लम। इसलिए उसको भी हमें कुछ अभ्यास चाहिए। नींद का व्यवस्था, कब सोना है, कितने बजे सोना है, शरीर के लिए कितना विश्रांति का आवश्यक है 24 घंटे में, मन के लिए कितना है, ब्रेन के लिए कितना है, वो सारे तैयार है, उसका ट्रेनिंग देना है। तीसरा होता है कि मैथुना, जब हम सुख में होता है कि इंद्रिय देखने में, खाने में, सुनने में, टच करने में, मैथुनादि क्रिया में हमारा सुख मिलता है। इट्स कॉल्ड इंद्रिय जन्य एम्पिरिकल प्लेजर्स। सो ये सेंसरी प्लेजर्स है, उससे भी हमें सुख मिलता है। लेकिन कितना हमें मैथुनादि क्रिया करना है, कितना इंद्रिय जन्य सुख को हमें करना है, कि वो भी शास्त्र में सुख की मात्रा सीमित किया गया है और लिमिट किया गया है। इससे हमारा आनंद का जो भाव है, सुख का भाव अंदर से उत्पन्न हो, लेकिन पीड़ा ना हो। चौथा मुख्य बात होता है कि हर प्राणी के लिए भय होता है। योग में उस भय को अभिनिवेश, मरण भय बहुत बड़ा है। योग शास्त्र में भी लास्ट योगांतराय में अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व, हम हर बार कुछ के लिए प्रयास करते लेकिन मिलता नहीं है, उससे दुख होता है। मिलने के बाद उसमें स्थिर नहीं होते, समाधि भाव हो गया लेकिन समाधि स्थल में हमने ज्यादा दिन तक रोक नहीं पाते। मैं डायरेक्टर बनने के लिए कोशिश करता हूँ, डायरेक्टर बनने के बाद डायरेक्टर रहना है, अच्छी ढंग से कार्यकाल भी करना है। ये चौथा भय है कि वो मानसिक तौर पर होता है। इसके लिए हमें 3 तरीका का मैं कहता हूँ कि सबसे पहले हमारा काय घट शुद्धि के लिए आहार और षटकर्म, उसको अभ्यास करना है। और दूसरा है कि आसन प्राणायाम ध्यान से हमारा मानसिक एकाग्रता और शांतता की आवश्यकता होती है, उसको पूर्ण होता है। दैट्स व्हाई कॉमन योग प्रोटोकॉल में 45 मिनट में हमने आसन प्राणायाम और ध्यान की अभ्यासों का बताया। तीसरा में आ जाते हैं कि हमारा जो भय के सारे निवारण करना है, कि इसलिए जीवन का लक्ष्य हमारा मोक्ष प्राप्ति, आनंद प्राप्ति के लिए, अपने आप को जानने के लिए है। इसके लिए योग में 3 तरीके के बताए। पहले निष्काम करना है, क्योंकि एक बार हम जन्म लेने के बाद कर्म करेंगे। निष्काम कर्म को हमने पूर्णतः भक्ति से करना है, प्रेम से करना है। लोगों के प्रति प्रेम को हम प्रेम करते हैं, उसी को भगवान के प्रति हो गए, उसको भक्ति कहते हैं। और कर्म और भक्ति में हमने लीन हो गया, उसमें हमें ज्ञान मिलता है कि नित्य अनित्य वस्तु विवेका, मतलब एक जो सही है, नित्य है, वही को हम करते जाएंगे, हमें दुख में कभी भी आते नहीं। इसलिए षटकर्म आहार इत्यादि को पालन करने से घट शुद्धि हो जाती है। आसन प्राणायाम ध्यान से हमारा चित्त शुद्धि, मनोशुद्धि, शांत भाव होती है। कर्म ज्ञान भक्ति अभ्यास करने से हमारा नित्य विवेक, नित्य अनित्य वस्तु विवेक होता है, वहां हमने गलती बहुत कम होती है। इससे हमारा कर्म शुद्धि, तब हमें यम नियमों का पालन इतना अच्छी ढंग से करते, इतने हमारा समाधि भाव। इसलिए पतंजलि ने 3 तरीके अष्टांग योग से पहले 3 इंपॉर्टेंट बताया। अशुद्धि क्षय, ज्ञान दीप्ति, विवेक का ख्याति। ये 3 हो गया तो विवेक के ख्याति में रहेंगे। सुख का जो लक्ष्य है हमारा वो शाश्वत रहेगा। तात्कालिक सुख से ज्यादा परमानंद के लिए और पे योग में जाते हैं।
भौतिक ताप तो रहेंगे, शरीर का ताप हर व्यक्ति के लिए होता है, उसको हम निर्मूलन नहीं कर पाते, लेकिन अंतरंग का जो भाव है हमेशा आनंद भाव में होने के लिए नित्य सत्य वस्तु में हमें रहना है, वो ही योग का साधन हम करते हैं। इसलिए कॉमन योग प्रोटोकॉल से हमारा शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ कर्म भक्ति ज्ञान योग का जो तत्वों सिद्धांतों को अनुपालन करने से हम नित्य विनूतन सत्य पर रहेंगे, तब आनंद का अनुभूति करेंगे। यही संदेश को हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे दुनिया के योग गुरु हैं, योग मास्टर्स है, विद्यार्थियां हैं, सब लोग मिलकर करें। एक जन आंदोलन के रूप में इस बार इसका रूपरेखा तैयार की गई है। उसके जरिए हम सारे, आप भी इसमें शामिल हुए, आप लोगों को बधाई देते हुए और एक बार मुझे आपके साथ मेरा कुछ विचारों को प्रस्तुत करने के लिए जो आप लोगों ने मुझे मौका दिया है, विशेष तौर पर परम मित्र बी आर शर्मा जी को मैंने पहले देखा है कि भाभी जी कुसुम शर्मा जी भी बैठे हुए, और बहुत सारे विद्यार्थियों को मैं मुख्यतः जानता हूँ, आप फैकल्टी को भी जानता हूँ। आप लोगों को देखकर मुझे बहुत हर्ष हुआ। सो इसी हर्ष के साथ और एक बार शुभकामना देते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ओम शांत शांत शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये प्रोग्राम सिर्फ आपके कारण ही हम आयोजित कर पाए हैं, अन्यथा ये संभव था नहीं। बहुत सारी कोशिश हुई है, हमारी आईटी टीम ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ इंटरनेट की असुविधा के कारण ये थोड़ी सी कोशिश बीच में आई। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। फिर भी आपने अपना अमूल्य समय, जबकि आप निश्चित के साथ मीटिंग में हैं, फिर भी आपने थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाला है। इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और धन्यवाद, बहुत अच्छा था सरकस्टी और कंटेम्पलेशन कितना सुंदर से गुरुदेव जी हमें बताते हैं पतंजलि योग कंटेम्पलेशन योग का क्या उद्देश्य है और कैसे 9 ऑब्स्टेकल हम दूर कर सकते हैं योग, और कैसे 3 चीजें हैं जो योग से हमें मिलती है। सर भी हमें बताते रहे, सर का पतंजलि योग सूत्र सीरीज 40 वॉल्यूम इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, कैन आल्सो वॉच दैट। तो ये अमूल्य धन है, निकाल कर जितना हो सके उतना करने का वो जारी रहना चाहिए। स्केल है, बढ़ता रहता है, ये एक दिन में नहीं होता, पूरी जिंदगी करनी चाहिए। तो हम करते रहते हैं। मैं पर्सनली भी करती हूँ, मैं अनुरोध करूंगी आप लोगों को करो। मैं एक कहानी बोल देती हूँ, गुरुदेव कैसे, हाउ गुरुदेव रेजेस बार। So what he does, he did all the programs like when one instrument, thousands of artists in one place. ऐसे हमारे more than a dozen of program happened in different cities of the India. Then he told all the artists come to Bangalore and perform Silver Jubilee celebration in 2006. So it took a big Jaipur airdrome. Many of us have witnessed it. 2006. That was 25 year celebration of art of living. Silver Jubilee celebration, and we celebrated. 25 lakh people gathered and celebrated. And next he told, do the same thing in Berlin, not in India, but in Berlin. So that was the 30-year celebration in 2011. So we all went to Berlin and celebrated there, and we saw the people around the world coming to Berlin, and it rained in Berlin, and it was horribly cold on that day, and the program was hugely successful. Next, after 5 years, in 35-year celebration, he told we will do it on the banks of Yamuna and the marshal land
He did it 37.5 lakh to commemorate 35 years of art of living. And people from 155 countries came, and all the musical instruments, everything were arranged in a huge stage, which it was sort of a hanging stage. It was no less than, half of the places that from Konark to here, the stage was so big, and it happened. 3 days program happened, and all of us are witness to it. If you are not witness to it, you can see in YouTube World Culture Festival. So why I'm telling this is he raises bar, and now 40 years has come, so we have many more things to do. So I was thanking people, I was thanking organizations for us to achieve, to help us achieve this thing. Your small initiatives, mind. So, so today I myself have organized first time such type of program in Konark. I have been coming to Konark for last 3-4 decades, but I have never organized a program in Konark. So many of us have the same situation, and we did it, and that's success. So clap for all of us who take part of this event. And every event valued in our lives, every event teaches us a lesson. If it is one lesson, also it may change your life. So, so let us take it that way. And I would like to congratulate the Faculty of Health and Wellness, Department of Yoga for putting up such a brilliant show and making it a reality. Dinesh ji, Pratibha ji, Premchand ji, Mamta ji, and Sarvesh ji, the DH office, Sahu ji, and huge effort by Jaikar ji, huge talia for Jaikar ji, who has not slept for 3 days, and Mani ji also similar, not slept for 3 days, Rupat ji, and the whole operation team. The IT team has first time did it in Konark, and the Department of Public Relations, Sonali ji, and Kupe ji. So thank you very much for making it a great show, and this is going to be historic because after 5 years, 10 years, the ministry will say we have done. We are one of the 100 organizations in the country to participate in the historic place, and it is not a small thing because nobody allowed to perform there. It is because the ASI allowed all of us to go there. We go. Otherwise, nobody can dance in front of Konark nowadays. And maybe 100 years ago it was a possibility. Now it is easy. So let us pat ourselves for making it such a huge event. Thank you very much. Sir. और सर को बहुत बहुत धन्यवाद. ऐसा एक हमें रेजिंग बार करने के लिए मौका दिया हमें. Thank you very much, ma'am, for always inspiring the kind of work that you do. Thank you everyone for being here today to make this special. Each one of you has contributed in some or the other way. And I thank our chief guest, Nayak ji also. Thank you very much for joining us. We will now take a short break for 5 minutes and then we'll assemble back. A short break for 5 minutes. Thank you.
The recording has stopped.
को बहुत बहुत नमस्कार। अभी हम एक छोटा सा सेशन करने वाले हैं जिसमें हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे, जैसे हम सेल्फ हीलिंग टेक्निक्स के नाम से भी जानते हैं। तो जब भी हम कुछ अभ्यास करते हैं तो उससे पहले हमें जानना चाहिए कि हम वो प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं। सूक्ष्म व्यायाम इज अ पार्ट ऑफ योगिक टेक्निक्स। तो कोई आंसर करना चाहता है? हम क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं? कोई भी बोल सकता है, सर, मैम। ओके, एनीवन एल्स? अभी हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करने वाले हैं जो एक योग का ही अंग है। सभी कहते हैं योग करना चाहिए, अच्छा है, पर क्यों करना है? डू एनीवन लाइक टू आंसर दिस? Recording in progress. तो मैम ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। इसके अलावा एक और चीज आपको ऑब्जर्व करनी है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, कभी आपने एक छोटे बच्चे को ऑब्जर्व किया है क्या? हाँ, वो किस आकृति में लेटता है, बैठता है, या उसकी हस्त मुद्राएं क्या रहती हैं? हाँ, और कुछ? हाँ, शशांक आसन, शवासन, और कुछ? अच्छा, ठीक है। अगर हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं, छोटा बच्चा मतलब नवजात शिशु जिसका कुछ दिन पहले ही जन्म हुआ है, उसको प्रायः एक ही मुद्रा में रहता है। अंगूठे को अंदर रखते हुए वो अपनी सारी उंगलियों को बंद करके रखता है। इसे हम योग में आदि मुद्रा के नाम से जानते हैं। वो योग का ही एक भाग है जो एक छोटा बच्चा कंटिन्यूअसली करता रहता है। इस मुद्रा को अगर हम ध्यान से देखें तो हम अपने अंगूठों के कुछ पॉइंट्स को प्रेस करते हैं। ये जो पॉइंट्स है इसे हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं। और मेनली यहाँ पे जो पॉइंट्स रहते हैं अंगूठे के बगल में, ये हमारी स्पाइनल नर्व से कनेक्टेड होते हैं। स्पाइनल नर्व हमारे ऑटोनॉमिक या नर्वस सिस्टम का एक मेन पार्ट होता है। नर्वस सिस्टम इज द वन व्हिच बैलेंस आवर होल बॉडी। तो जब भी हम ये मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो हम अपनी सारे शरीर की गतिविधियों को समता में लाते हैं, पूरी फिजिकल फंक्शन को बैलेंस करते हैं। अभी जैसे हमने एक छोटे बच्चे को देखा, वो लगातार ही योगा, नवजात शिशु में जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो भी कुछ कुछ समय पे वो अपनी शारीरिक आकृतियों को बदलता है, मुद्राओं को बदलता है। तो हम योग का अभ्यास इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी प्रकृति से, स्वयं की प्रकृति से जुड़े रहें, जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास हो, हम दोनों रूप से स्वस्थ रहें। ठीक है, एवरीवन इज सेटिस्फाइड? सही था ना आंसर? हाँ, तो अभी हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। सभी आराम से अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं। हाथ की हथेली आपकी जंघाओं पर, आसमान की ओर, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। एक गहरी श्वास अंदर, धीरे धीरे श्वास को बाहर जाने दें। अपने श्वास प्रश्वास का अनुभव करिए। ऑब्जर्व योर ब्रेथ्स। Take a deep breath in, breathe out. We'll chant Om for one time. Breathe in. Om.
विश्राम। एक गहरी श्वास सजगता के साथ अंदर, धीरे धीरे बाहर। आराम से आंखें खोल सकते हैं। अभी हम अपने दोनों हाथों से ऐसे अंगूठे को बाहर निकाल कर रखेंगे और उंगलियां सारी ऐसे मोड़ी हुई, हाथ हम सब दिखाते हैं ना वैसे, और इसके सहारे अपने अंगूठे से कान को दबाएंगे, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक ईयर लाइन को प्रेस करना है। दोनों हाथ से करेंगे, मेरे एक हाथ में माइक है इसलिए आई एम यूजिंग जस्ट वन हैंड। थोड़ा हाथ को कान के ऊपर ले जाएं और उसे ऊपर की ओर खींचें, थोड़ा ऊपर। come to the center of your ear, again stretch it outward, relax। पिना के पास आ जाएंगे कान के नीचे और उसे नीचे की ओर खींचे, थोड़ा और नीचे। ये हमारे ऑक्यूलर पॉइंट्स होते हैं और एक्यूलर पॉइंट्स होते हैं। हमारे कान में जो भी पॉइंट्स होते हैं, कंटिन्यू प्रेसिंग योर ईयर्स। हमारे कान पर जो भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं तो हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं। तो जब भी हम इस पार्ट को ऐसे प्रेस करें तो अपने डिफरेंट ऑर्गन्स को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। एंड रिलैक्स। हैंड्स ऑन योर थाइज, फेसिंग द थाई। नेक बेंडिंग करेंगे। एज यू ब्रीथ इन, स्लोली टेक योर नेक अप। As you breathe out, slowly take your neck down, touch your chin to the chest. Then up, breathe out, down, breathe in, up, breathe out, down, hold it. Take a little breath in and breathe out fully. Press your chin on the chest. Hold your breath outside. Keep on holding your breath. 5, 4, 3, 2, 1. Very slowly breathe in and neck in the center. Relax. अभी अपने दोनों हाथों को कुर्सियों के हाथ पर रख देंगे। चेस्ट एक्सपेंशन की प्रैक्टिस करेंगे। श्वास भरते हुए हमें अपने मिडिल बैक को आगे की ओर पुश करना है, कंधों को पीछे ले जाएंगे और थोड़ा ऊपर की ओर देखेंगे। अच्छे से मिडिल बैक को स्ट्रेच करेंगे। श्वास छोड़ते हुए छाती को भीतर की ओर खींचेंगे, ठुड्डी को सीने से लगाएंगे और कंधे को आगे खींचेंगे। Breathe in, look up, push your middle back outward, expand your chest. Breathe out, contract your chest, chin on your chest. One more time, breathe in, look up, expand your chest. Breathe out, chin on the chest. This time, as you breathe in, relax yourself. Now, slowly raise your right hand up. Touch your ears with your hands. दोनों हाथ को ऊपर उठाना है। As you breathe in, stretch your right hand up. Left hand will be on a relaxed position. Just stretch your right hand up. थोड़ा ऊपर. Relax your right hand. Now stretch your left hand. थोड़ा सा और स्ट्रेच करेंगे। Relax the left one, stretch the right one. Right hand up, थोड़ा सा और ऊपर। अच्छा, कुछ लोगों के हाथ कान से लग ही नहीं पाते हैं, पता नहीं लगा नहीं रहे हैं या हो नहीं पा रहा है। थोड़ा ऊपर। Change left and relax. Slowly take your hands down. अभी जिसने चप्पल जूते पहने हैं वो निकाल सकते हैं। और अपने पैर को थोड़ा सा आगे की ओर उठाएंगे, जितनी जगह है बस उतना ही। और अपने पैर की उंगलियों को आगे पीछे करेंगे। जब भी हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स देखते हैं तो हमारे पाम्स में और फुट में हमारी बॉडी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स उपलब्ध होते हैं।
अच्छे से आगे और पीछे करें। चेंज। अभी उंगलियों को ढीला छोड़ देंगे, पांव के पंजे को आगे की तरफ खींचे, थोड़ा और आगे। कंटिन्यू ब्रीदिंग इन एंड कंटिन्यू ब्रीदिंग। ब्रीद आउट एंड स्लोली टेक योर टोज टुवर्ड्स योर बॉडी। थोड़ा और पीछे लेकर आएंगे, इतना अच्छे से स्ट्रेच करेंगे कि आपकी काफ्स भी स्ट्रेच हो जाएं। ब्रीद इन आउटवर्ड, होल्ड, ब्रेथ को होल्ड करके रखेंगे, पांव के पंजे को और आगे पुश करें। कंटिन्यूअस प्रेशर। ब्रीद आउट बैक। One last time, breathe in out, breathe out, toes towards your body and relax. अभी यहाँ से अपने घुटने को बिना, जैसे हमारे घुटने 90 डिग्री के एंगल में है, उस एंगल को मेंटेन रखते हुए श्वास भरेंगे और राइट लेग को हल्का ऊपर उठाएंगे। हाँ, जिन्होंने साड़ी पहनी है वो भी कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरें ऊपर, श्वास छोड़ें नीचे। One more time, breathe in up, breathe out down. Change the leg, left leg up. Do it with breath. Breathe out down. Breathe in up. Breathe out down. Breathe in up. Breathe out down and relax. Close your eyes. Again, take your attention to your breath. Long and deep breath in. Breathe in a little more and hold your breath inside. Keep on holding your breath and feel the pressure in your lungs. Hold. Very slowly breathe out. And again, hold your breath. Breathe out fully and hold your breath. 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Observe the changes in your body. Observe all the 3 fingers are straight. Right hand in Nasag, index finger and middle finger in your eyebrow center, thumb on your right nostril, remaining 2 fingers on your left nostril. Breathe in from both the nostrils and very slowly breathe out from the both. With thumb, close your right nostril, inhale from left, little more breath in. Slowly close the left one and breathe out from right. Breathe in from right. Breathe out through left. This is one round of Nadi Shodhan. Like this, we will continue for another 5 rounds. नियंत्रित श्वासों के साथ नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे। जितना गहरी श्वास भर सकते हैं उतनी गहरी श्वास अंदर ले जाएं और पूरी समता और नियंत्रण के साथ श्वास को बाहर छोड़ें। ध्यान दें, आपकी श्वास लेने की अवधि से अधिक श्वास छोड़ने की अवधि हो। Length
of your exhalation should be more than the length of your inhalation. Relax after completing the 5th round of Nadi Shodhan. दोनों हाथ की हथेलियां घुटने पर आसमान की ओर, वापस से ध्यान सामान्य रूप से चल रही श्वासों पर। हम ये छोटे छोटे अभ्यास करके शरीर के हर ऑर्गन को सिमुलेट करते हैं। प्रभाव शरीर के प्रत्येक भाग पर जाता है। जब भी हम इनका अभ्यास प्रतिदिन करते हैं पूरे अनुशासन के साथ, तो ये हमारे शरीर को स्वयं ही ठीक करने में सहायक होता है। It helps us, our body, to heal itself. Relax. Let us sit comfortably and easily. Keep our spine erect, पैर की हड्डी सीधा रखें, कंधों को ढीला छोड़ दें और आंखें बंद कर लीजिएगा। एक गहरी सांस लीजिए और सांस को रोकिए और रोकना छोड़ दें, सांस अपने आप बाहर निकलने दें। और अपने आप सांस फिर भरने लगेगा, भरने दीजिए। सांस पूरी तरह से भरने के बाद रोकिए। जब सांस रोकते हैं, मन की स्थिति देख लीजिएगा। और रोकना धीरे धीरे छोड़िए और सांस अपने आप बाहर आने लग जाएगी। फिर एक बार सांस लेंगे। सांस पूरा भरने के बाद रोकेंगे। रोककर अपना मन की स्थिति पर ध्यान देंगे। सब थम सा गया है, सब रुक गया है। सांस रुकते ही मन भी रुक जाता है। और ज्यादा रोक नहीं पाएंगे तो आप रोकना बंद कर दीजिए, सांस अपने आप बाहर आने लगेगा। अब शरीर को सुकून मिल रहा है, विश्राम मिल रहा है। इस वक्त उस पर भी ध्यान दें। मन ही मन अपना शरीर के प्रति सम्मान का भाव रखें। अरबों खरबों अणु परमाणुओं से बना है आपका शरीर। यह शरीर हमारे लिए मिला हुआ एक अद्भुत देन है। Honor your own body. Your body is the most precious gift to you from nature. The millions and trillions of cells in your body. Now become aware of the air all around you and inside of you. The second dimension.
the breath. It is the breath that is keeping us alive. ये सांस ही हमारा साथी रही है जब से हम आए दुनिया में, और आखिरी क्षण तक सांस हमारे साथ रहेगी। ये जीवन का साथी है सांस। जैसे जल में मछली, ऐसे हवा में हम हैं। भीतर और बाहर की हवा को एक साथ महसूस करें। Feel the air inside and outside of you simultaneously. Now breathe in with a smile and breathe out with a smile. As you smile, all the muscles in your face and the brain gets deep relaxation. अब तीसरे आयाम पर चलते हैं, मन, जिसमें विचार घूमते हैं, जहां भावनाएं उठती है। अपना ही मन। Let's move to the third dimension of our mind. Our body is like the wick of a candle. The mind is a glow all around it. शरीर बाती है तो मन ज्योति है। मन एक बादल जैसे शरीर के चारों ओर भीतर बाहर मंडराता है। आप मन ही हो। A body is inside the mind. Rather, body is inside of you. As you relax, the mind expands. And as the mind expands, your body relaxes. Let's take a deep breath in, and as we breathe out, relax. मुस्कुराते मुस्कुराते विश्राम करें। जो भी विचार आ रहे हो मन में, बुरे सभी विचारों को जैसे हर पात्र का अपना महत्व है, मन में हर विचार को भी अपना स्थान है। सब विचारों को गले लगा ले, स्वीकार कर ले। टेक all with you. You are much bigger than all these thoughts that hover around in the mind. A deep breath in and breathe out. सांस लीजिए और छोड़ें। कंधों को और ढीला छोड़ दें। Become aware of the vast sky. विशाल गगन का स्मरण करें। हमारी चेतना ऐसा ही है, आकाश जैसे विशाल। You are like the blue sky, unaffected, untainted.
relax and be yourself. अपने आप में विश्राम करें. Repose in yourself. Let go of all the tensions, all the worries. Repose in yourself. Any discomfort, any tension you feel anywhere in the body, just let it be. कहीं कोई तनाव लग रही हो या असुविधा लग रही, उसको रहने दें. वे अपने आप ठीक हो जाएंगे. आप अपने आप में विश्राम करें. Take another deep breath in, breathe out. Om Shanti, Shanti, Shanti. धीरे से शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाएं. मुस्कुराते मुस्कुराते एक और गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें और आंखें खोल सकते हो. Let us open our eyes slowly and gently. अच्छा लगा सभी को प्रैक्टिस करके. हाँ, सभी लोग थम्स अप दिखा सकते हैं अगर अच्छा लगा तो. हाँ, शायद कई लोगों की सुबह की वो चिर नींद भी पूरी हो गई अभी. तो हम एक दिन प्रैक्टिस करते हैं फिर भूल जाते हैं. फायदा एक दिन में भी होता है, पर उसका योग का या किसी भी ऐसे अभ्यास का असर तभी शरीर और मन पर पता चलता है जब हम उसे प्रतिदिन करते हैं. आज कर लिया तो अब थोड़ा थोड़ा रोज कर सकते हैं. थैंक यू. I request Vice Chancellor sir to please come and give a bouquet. Come better and seek blessings. And give blessings. You can seek blessings. We have with us Madam Mrs. Mukul Sharma Madam. She is also a doyen in naturopathy and yoga. A huge round of applause for joining us, Madam. Thank you. I request Rupalji and Maniji to please continue the session. We may say, Gaurav Bhaiya, that we are here 70-80 people. We now invite Sri Gaurav Verma ji, our Director Operations, Sri University, to address the
He is a senior international Art of Living faculty. He has been associated with the organization for almost over 2 decades. He is an expert committee member with Ministry of Ayush. He has played a vital role in designing common yoga protocol, which is practiced all over the globe on International Day of Yoga. He has traveled far and wide to Europe, Middle East, New Zealand, Russia, South America, and many other countries to share the tools and knowledge of happy, healthy, and successful living. A student of science and teacher of spirituality is what he is. Gauraji, I request you to address the students who gathered here. We are about almost over 60 people here. Please. Thank you, Rupal. Thank you to invite me to speak at this momentous occasion where we are approaching towards the International Day of Yoga with this campaign, which is run by the Ministry of Ayush and MDNIY, this 100 days countdown campaign, where 100 days, 100 cities and 100 organizations are involved. It is an immense pleasure to share with all of you that I have been part of this International Day of Yoga since it is conceptualized and initiated by Honorable Prime Minister in the year 2015. Another privilege and an honor with me is that I have been part of all 3-4 initial years program of Honorable Prime Minister, which was organized in New Delhi for the very first year when we initiated International Yoga Day, and then in the consecutive years for Lucknow, Dehradun, all these different places. So it is nice to see Shri Shri University successfully organizing this event at Konark Temple with all our students and other partners and practicing yoga protocol in the morning. I know that you all started early morning. That is what the yogi is all about, you know, who is always full of energy, or who is always ready to participate, filled with enthusiasm, joy, cheer, to contribute with a sense of contribution. Yeah. Professor B.R. Sharma sir took this initiative after the request from Ministry and MDNIY that we should organize this event, though it is far from our university, but still I feel happy to see that it is happening successfully there with all of you. Now, we all have been practicing yoga. I am sure that those who are there, वो सब योगा तो करते ही हैं, सभी आप सब लोग वहां पर हैं, बट एक्चुअली हम योगा को समझते क्या हैं? एक सिंपल जब आप सुनते हो कि योगा, तो हमारे माइंड में यही आता है कि maybe some asanas, physical practice, right? I would like to share a short story with you. Yeah, are you all interested in listening, or I'm sure you all are interested. I would not take much of your time, but there is something interesting I would like to share with all of you, and I would like you all to pay the attention. Once a student of spirituality on this path, on the quest to find the purpose of life, came up with this question कि क्या spirit भी body के साथ खत्म हो जाती है? क्योंकि we haven't seen spirit ever, the soul which we talk about, क्या वो भी इस body के साथ खत्म हो जाती है? With this sincere quest, he approached his master, guru, and very humbly asked this question. So Guru, looking at the innocence of the question and the sincerity in the quest, give answers with a short illustration. The master mentions, like milk is there. What is the shelf life of milk? The shelf life of milk is not very long. It gets spoiled if you not preserve it properly. It gets spoiled in just one day. एक ही दिन में अगर आप देखेंगे तो दूध खराब हो जाता है, right?
बट उसी दूध में थोड़ा सा बटर मिल्क अगर आप ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, इट बिकम्स कर्ड विच कैन बी प्रिजर्व्ड लिटिल लॉन्गर, या इट बिकम्स कर्ड, उसको आप ट्रांसफॉर्म करके यूटिलिटी बढ़ा दिया उसका, एंड यू कैन यूज इट even further. Now this curd churned further gets into butter. Yes, I'm not sure whether you have done it or not yourself. I can see lots of students there, but people like me have definitely done this. Those who are married, they must have done it for sure because of helping their spouse. So when you churn the curd further, you can bring it into butter, whose shelf life is even more than milk, right? Now this butter also goes rancid after few days. वो भी बासा हो जाता है कुछ दिन बाद, इतना नहीं चल सकता है. But further, if you process this butter by melting you can make this butter into ghee, and that ghee can be preserved for longer period of time. Yes, no? So what has happened? The milk, which could only be preserved for just 1 or 2 days, now you have produced butter out of it, which has a shelf life for years to come, right? In the same way, in this perishable body lies something which is imperishable, which is eternal. Yoga is something which helps us to connect with that something which is eternal. Yoga is not just a physical practice. Yoga is a way to connect with something which is eternal. Yeah, soul, spirit, consciousness, atma, ruh, chetna. You know, there are different names of this something which we can't see. In fact, आप देखोगे what happens in your day-to-day life. You run short of energy, enthusiasm, joy. If you look like spirituality, जब हम बोलते हैं अध्यात्म, what is the definition of spirituality or अध्यात्म? अध्यात्म means आत्मा की गुणों की वृद्धि करना. You know, the qualities which you were born with. Spirituality is enhancing the qualities of spirit. So what are the qualities of spirit? The qualities of spirit is enthusiasm, joy, belongingness, caring, sharing, confidence, clarity. Yeah. So yoga and spirituality helps us to retain and to sustain those qualities in our life. उसको बनाए रखने के लिए help करता है. And like as I shared this with you with an example, the illustration of the master, that spirit, when you connect with that spirit which is eternal, which is enormous, which is imperishable, so what happens? Your enthusiasm, your clarity, it remains forever because you are connected with the source. Like if you see, we have always heard that we are part of nature, we are part of all these elements, earth, water, air, fire, ether, all these elements. But if you look at the elements, you would find that they are always there, committed, without fail. If you see, sun is every day rising, doesn't say that today I'm tired, I would not rise, I'll take a break, today is a holiday for me. Have you ever seen like that? No. Why? Because it's a source. In the same way, earth is always there. Doesn't say that, okay, I'll not carry people on my lap today. Today is a break day. Today is Sunday for me. No, it doesn't happen. Why? Because it's the source. It is natural. In the same way, when you connect with something in you which is most natural and the source, what happens? You realize that you gain the spirit which is undying, yeah, which is always there. You find yourself enthusiastic, you find yourself energetic, you find yourself healthy. If you see, look at this word health in Hindi, it is said swasth. Yeah, swasth is not just, swasthya is not just mere absence of diseases. Rather, swasth is connecting with oneself, established in oneself. That is being healthy. Swasth, established in oneself. So yoga helps us to get established in the source of our existence. And when we operate from that very zone of our life, life becomes altogether different. Life becomes enthusiasm, joy, and love, which we actually are.
Yeah. So now those who are participating in this event, this responsibility lies on your part as well, that you promote this culture of yoga. Like, every different culture, we accept the things from all different cultures in the world. Like if you talk about noodles, it comes from China and we enjoy eating noodles. If you talk about pizza, it comes from Italy and it is readily accepted now in all part of the world. In the same way, yoga needs to be taken to each and every corner of the world, and it is happening. We must take this responsibility to share this knowledge of yoga, our culture, which is to make one's healthy, happy, joyful, and connects to the source. So we must take this responsibility with this event and resolve to become an ambassador of yoga, or rather be a yogi, a step further, practice yoga every day, be a yogi, and share this beautiful knowledge with as many people as possible. With these few words, thank you very much for giving me the opportunity to share my thoughts with all of you there. And I once again congratulate each one of you for participating in this event. I congratulate our VC sir, Professor Sharma sir, Vijay Lakshmi madam, and the entire team, those who put their efforts, sincere efforts. Yesterday it was Gurudev's birthday celebrations. So we finished it late night, each one of you. It was a rest day sort of a thing for all of us. But still, they are there with the commitment to organize this event, and that too early in the morning. That is what the spirit of a yogi is all about. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, Gaurav. Beautifully explained the depth of yoga and with such simple examples. And you've inspired all of them to, reach out the message of yoga far and wide. Thank you very much for joining us and giving your time. Thank you. I now invite Honorable. Okay. So we'll now have a quick Q&A session. If anybody has any questions, our officer would be more than happy to answer. Questions? Yes, please, ma'am. Jai Gurudev. We have